हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे डॉक्टर आनंद रंगनाथन और राजमानी की कॉन्वर्सेशन डर्टी रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, फार्म रिफॉर्म्स एंड नेक्स्ट पीएम। ये पार्ट 1 है वीडियो का, 3 पार्ट्स में चेक करेंगे। लेट्स जंप टू द वीडियो। More than India being a land of opportunities, India is a land of missed opportunities. Our trade imbalance with China has crossed $101 billion. 75% of our prisoners are under trials. पता ही नहीं है वो एक्चुअल गिल्टी की नहीं है. Exactly. जेल में सड़ रहे हैं. As I say, if you're not in jail right now, it is because the state has decided you need not be jailed. India is the world's second largest producer of sugarcane. And the amount of water that we use for sugarcane production is 1 quadrillion liters, which is equivalent to the water that is present in 10 Ganga Sagar dams. ये यूपी जैसे स्टेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र जैसे स्टेट कर रहे हैं. मलेरिया एग्जिस्ट कर रहा है अभी, ट्यूबरक्यूलोसिस. हमने ग्रैंडियोस प्लान्स कह दिए कि बाय 2025 वी आर गोइंग टू इरेडिकेट ट्यूबरक्यूलोसिस. इट्स नेवर गोना हैपन. चल क्या रहा है इस देश में? आज का एपिसोड सर आनंद रंगनाथन के साथ है. उनकी ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. उनके नाम पे सर्च कर करके लोग कंटेंट ढूंढते हैं और हमें बहुत बार बोलने लगे कि उनको हम एपिसोड पे लेके आए, क्योंकि बड़ा सा एंटरटेनिंग हार्डकोर रिसर्च वे में वो समझाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को. उन्होंने हमें पॉडकास्ट में बताया कि क्यों हिंदुस्तान की कुछ स्टेट्स बहुत बेटर करती हैं और कुछ स्टेट्स खराब करती हैं. क्या उनकी लीडरशिप, उनकी गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करती है पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ के आने वाले लोग और आने वाला बिजनेस वहाँ पे कैसे बनेगा. उन्होंने हमें बताया कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग स्टेट को, अलग अलग लीडर्स को कैसे इवैल्यूएट करती है, और भी बहुत सारी बातें करी अबाउट इनसाइट्स इन इंडिया. तो अगर आपको जानना है कि इंडिया में आपकी लीडरशिप कैसे चलती है, इंडिया की अलग अलग स्टेट्स कैसे चलती है, इंडिया में कौन अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा अकॉर्डिंग टू अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन सब के बारे में हमने बात करी है. बिफोर यू स्टार्ट द शो, यू नो दैट आपको राजमानी क्लिप्स और राजमानी शॉर्ट्स चैनल को जाके चेकआउट करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि ये कम समय में आप एक बेहतर लीडर बन सकें. एंजॉय द शो. Sir, welcome to Figuring Out. Thank you very much. I already feel a good vibe with you. I'm excited to do this podcast. Okay. You know, मेरी टीम रिसर्च कर रही थी आपके बारे में, एंड रिसर्च करते टाइम उन लोगों को विकिपीडिया लिंक नहीं मिली आपकी. क्योंकि अपेरेंटली वो डिलीट हो चुकी है. Yes. 3 लोगों की हो चुकी है. आई थिंक संजीव सान्याल की हो चुकी है, मेरी हो चुकी है, एंड आई कांट रिमेंबर इज इट विक्रम और किया. बट क्यों डिलीट हुई, क्या हुआ, रीजन बताओ क्या हुआ? वेल, इट्स डोमिनेटेड बाय द लेफ्ट. They want that space, that limited space. So as it is in India, there are only 3 places where left exists. One is in Kerala, the other is in JNU, and the third is in the media. So Wikipedia is an extension of the media. So they want to tightly regulate whatever is their domain or territory, Oh. So this thing about freedom of speech, this and that, the biggest, tramplers, if I can call them, of freedom of speech is the left. We know that already. So Okay, tell me, this, I'm asking you from a Gen Z millennial point of view. Right. क्योंकि ना एपॉलिटिकल बनना बड़ा कूल हो गया है. राइट. और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग एपॉलिटिकल बनते जा रहे हैं. राइट. स्टेटमेंट इट्स जस्ट लाइक, हे आई एम एपॉलिटिकल. Okay. डू यू थिंक कोई एपॉलिटिकल हो सकता है? नहीं हो सकते हैं, बट होना नहीं चाहिए. ओके, क्यों? Because sooner or later you have to be truthful towards yourself more than anything else, and you can't escape the realities of life. The realities are that ideologies exist. You have to, sooner or later you have to dislike one or like one. So to be, as I say, I never call myself, or never ever would want to be neutral. Objective, yes, I try to be as objective as possible, but neutral never, because to be neutral is to take sides, if you think about it. Switzerland was neutral during the World War.
you know. So it took sides of the Nazis. I would say they were, short of calling them, some may call it very harsh, but they were collaborators. If you look at all the Jewish loot paintings and all those things, they were, the Nazis kind of mailed them off to, Switzerland. So on the definition of it, it said Switzerland, we are neutral during the war, but it took sides, You can't take sides. So why do you feel that this is growing? This is a growing trend. The apolitical side. Everybody wants. Strangely enough, Rag, मुझे लग रहा था ये उल्टा है. मुझे लग रहा है कि लोग, they're coming up with their views and thoughts. No, there's only few people. Like really? Most of the people are like, hey, I want to stay away from this. So क्या वो मतलब, what is the reason? They're like. That's what I'm asking. Like, because the point is, you ask, okay, most of the people who I meet in office and everything, hey, I don't want to get into politics. I'm apolitical. I'm fine. Yeah. They don't want to vote. They want to stay away from voting. Okay. They just want to be like, it's cool to not be associated with something because they feel कि okay, ना left ना right, कोई भी side हमारा कुछ कर नहीं सकता. So it's better that हम हमारी मस्ती में चले और it's fine, जो भी होगा होगा types. Right. I mean, I would say fair enough. It's a free country, but I think personally, it's not a good idea because then what it makes a robot or a zombie out of you. I hope I'm not being disparaging. Everybody, as I said, actually, it makes sense for businesses to project themselves as apolitical, because we've seen in today's atmosphere, like Elon Musk, for example, he pisses the left off. We've seen so many other people who are on the left, they piss the right-wingers off. I mean, people wouldn't watch Swara Bhaskar's movies because they're irritated by her views. Fair enough, everyone, even I'm irritated by her views, but the fact of the matter is, boycott is something which has become almost like extension of the cancel culture. Cancel culture initially started from the academia. You don't like the views, or you're scared of the other person's views may get more prominence than yours, so you boycott him. धीरे धीरे उसको इधर नहीं बुलाओ, उधर नहीं बुलाओ, papers publish ये सब. It has now transgressed those boundaries, and it has become all pervasive. So you remember that was it Yatra ad where somebody impersonated Kanhaiya Kumar? So the left started boycotting Yatra, downvoting the Yatra app. Then there was Amir Khan, after his controversy about, he said, my wife just told me that, I don't want to stay in India, or should we stay in India? That he was the brand ambassador of, I forget, one of those startups or something like that. And the right-wingers were so pissed off, they started downvoting that. Now that's silly in the sense that अब वो उस ऐप की क्या गलती है कि उसने वो लिया. आप कल को अगर आप if you're pissed off with अमिताभ बच्चन तो अपने बच्चों को आप पोलियो ड्रॉप वाला बंद कर दोगे. I mean, where does it stop? So this thing about, and that it's fair enough if as businesses you worried about or you play both sides. As businesses. So as Mukesh Ambani famously said, Congress to meri dukaan hai, and people have, always, associated Adani and Ambani with Modi. So, then you're neutral. Then you're centrist. Then you're एक तो मुझे ये centrist समझ में नहीं आता. Centrist मतलब neutral ही हो गया एक तरह से. Because as far as economy is concerned, or economics of finance is concerned, being centrist is as bad as being leftist. So and as far as social matters are concerned, just say what is in your mind. So if Raj, you're saying that people, the next generation is worried that they might be pigeonholed or branded or labeled आजकल, right winger, left winger. I don't know. So I am called a Sanghi. अब तो मतलब everyone this thing. I don't know what you called. But the fact of the matter is, I don't think anybody, my personal opinion, should be at all worried about the label. You wrote one of the tweets which is very interesting. Okay, right. You said that Brits murdered 35 million of us. Right. Contrived 12 devastating famines. Yes. Looted $45 trillion. Yes. Reduced India to an opium economy. Yes. Broke us into two. Left us with a life expectancy of 32 years. Yes. That's just 1% of what they actually did, but that's just 1%. Yes, but we survived. Yeah. Right?
So we definitely survive, and now we're a bigger economy than them. Yeah. Right. So the question is, obviously, in last couple of years, we've outdone ourselves. If you look at, I was reading an economics paper where it said that on an average, in every 5 years, India has doubled itself in terms of economy. Right. I mean, not exact, but just like approximately. So the question is, how do you believe that in next 10 years, how will India become $10 trillion economy? Yeah. Do you think that's possible, A? And B, how will we become that? So I think at the current pace that we are going, first of all, I'm not a complete pessimist, so I don't believe glass half empty. Okay. But I'm also not a complete optimist, believing that glass is half full. लेकिन अभी देखो कोई भर रहा है, उसको कोई भर रहा है. मैं ये I question कि भाई ये half full क्यों है? So I genuinely think of India as a land of opportunities. True. But more convincing is the fact that I am convinced that India is a land of missed opportunities. So India is a land of missed opportunities. Missed opportunities. More than India being a land of opportunities, India is a land of missed opportunities. Why do you say so? हर फील्ड में. मतलब आप इकोनॉमी को ले लो. अगर आप मैंने एक we wrote an article with I wrote an article with Karan Bhasin, who's a very young and upcoming economist, and we tabulated that we have in India, we have about 1840 odd public sector units. And this is under Prime Minister Modi, who in 2013 said a government has no business to be in business. Yes. Right? That is what first endeared me to him. कि यार, this is a remarkable thing to say. Yeah. So true. Actually government, मतलब क्यों कर रहे हो? It's criminal. He repeated that in 2017. He repeated that in 2019. Government is doing. लेकिन all the government is doing is to be in the business of being running businesses, and approximately 20 to 21 to 25% of the annual budgetary allocation. It started off 10 years ago as 28 lakhs. Now it is 45 lakh crores that the finance minister disperses every year during budget. 20 or more percentage of that goes in propping up these public sector units. 400 of those are non-functional. पैसा लूट रहे हो. क्यों? क्योंकि हम में ये हिम्मत नहीं है कि हम ये बता सकें कि गवर्नमेंट कैनॉट रन बिजनेसेस. यू कैनॉट, बिकॉज देर इज नो सेंस ऑफ फेयर प्ले, देर इज नो सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन. नोबडी इज इन द डेंजर ऑफ लूजिंग देयर जॉब. प्रोडक्टिविटी जाए भाड़ में. मुझे कुछ नहीं है. मोनोपोली आपने देखा, जब एयर इंडिया, पहले सिर्फ एयर इंडिया थी, पहले इंडियन एयरलाइंस थी, कैसे चलती थी? नोबडी कैन फिर बाद में जब कॉम्पिटिशन आया, तो if you look at the Air Vistara or other Indigo or other this thing, 80 to 90% of the air traffic is now controlled by them, the flights. The private players. ऐसा क्यों हुआ? आप हर डोमेन में ये देखो, गवर्नमेंट का ये जॉब ही नहीं है. क्यों कर रही है ये? गवर्नमेंट का जॉब है सिर्फ डिफेंस, और उसमें भी यू हैव टू बी वेरी कंपेटिटिव. डिफेंस और एक दो और वो रीजंस हैं. और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि आई एम फॉर अ वेलफेयर स्टेट. मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट फॉर, बिकॉज अ कंट्री, पुअर कंट्री लाइक इंडिया, वी नीड टू सपोर्ट अवर पीपल फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड अ होस्ट ऑफ अदर थिंग्स. Not till perpetuity, but at least for the next 15, 20, 30 years, But the welfare state has to run not on socialism, but on capitalism. You have to generate revenue. Socialism is possible only in a capitalist economy, Socialism or welfare state is not possible in a socialist state. ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हम, जैसे आपने कहा 10 ट्रिलियन, अब 7 ट्रिलियन भी मान लो, 5 भी मान लो, तो बहुत मुश्किल. और जैसे आपने कहा, वी आर अ बिगर इकोनॉमी देन यूके in terms of GDP, yes, but you look at GDP per capita, that is what really matters. We are $2,000, right? They are $40,000-$50,000. They are standard of living, तो वही dictate करेगा ना. But that's also because our population, right? मतलब it's अच्छा, ये एक और फैलेसी है कि पॉपुलेशन, पॉलिटिशियंस ये हमेशा अरे सब चीज़ का एक्सक्यूज कह दिया पॉपुलेशन एक्सपेंस. इफ़ यू लुक एट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एरेबल लैंड, मतलब ये नहीं कि आपने डेजर्ट को इंक्लूड कर दिया. एरेबल लैंड मतलब जिसपे आप हैबिटेबल लैंड, ह्यूमन रह सकते हैं. इंडिया इज 7th
जो टॉप 6 ज्यादा प्रॉस्परस हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी हमसे ज्यादा है यार. जापान, सिंगापुर, हॉलैंड. वो क्या मतलब, आर दे ब्लेमिंग देयर wealth on population? नहीं. So we, of course, population is a worry. I'm not saying it's not, but there are other reasons for our being poor, and population density is not that. You said India is land of missed opportunities, right? But still, right now, everybody's saying that this is our time. This decade is India's decade. What do you see are the challenges of this country right now? I see only challenges. Okay. No, honestly. Okay. See, I'll tell you. And why. I see only optimism. But brilliant. No, I think I think both of us have given away our age. Yeah. Okay. I see only challenges because I see मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है यार. मुझे इस देश को महान देश देखना है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. और मुझे ये सीरियसली लगता है कि जितना भी टाइम मेरे पास है वो टाइम इनफ है इस देश को महान बनने को. लेकिन वो नहीं, वो सो आई डोंट बिलीव इन लीपिंग, आई बिलीव इन लीप फ्रॉगिंग. और ऐसी 3-4 डोमेन्स हैं जिसमें हम लीप फ्रॉग कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया. ये मुझे चुभती है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड you'll say, oh my God, why didn't I see this? You talk of, for example, agriculture reforms. अभी ये 3 फार्म बिल्स थे जो कि 1 साल तक पूरा दंगा फसाद हुआ और फिर वापस ले लिए. सॉरी, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ. No, it's okay, go ahead. ठीक है. सो हमारी कंडीशन ऐसी है, एक तो एग्रीकल्चरल जो भी हमारा सेक्टर है, इट एम्प्लॉयज 44% ऑफ आवर एक्टिव लेबर फोर्स. इंडिया का एक्टिव लेबर फोर्स है 515 ऑड मिलियन पीपल. उसका 44% कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन, समथिंग लाइक दैट हो गया, is employed in this sector that contributes agriculture sector that contributes only 12.5 to 13% of the GDP. इससे ज़्यादा शर्म की बात नंबर 1 नहीं हो सकती. नंबर 2, आप कोई भी मिडिल इनकम इकोनॉमी और डेवलपिंग एट अ फास्ट पेस कंट्री को देख लें, वेस्टर्न यूरोप की बात ही कुछ और है. 2 to 3% से ज़्यादा लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है. इंडिया में 44% है. 95% ऑफ द फार्मर्स आर नॉट इंश्योर्ड. ठीक है. दे आर आइदर स्पेयर्ड और डिस्ट्रॉयड बाय द एलिमेंट्स. एक बारिश हुई, एक ओले पड़े, आपकी सारी फसल बर्बाद हो गई. ठीक है. इंश्योरेंस आपके पास है नहीं. hundreds of thousands of farmers have committed suicide. ये एक ऐसा सेक्टर है. It was crying for reforms because otherwise the alternative was death and destruction that was already happening. ये नहीं कि आगे 10 साल जाके होगी. ये 3 रिफॉर्म्स क्या थे? नंबर 1 रिफॉर्म था कि हम एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को हटा देंगे या एकदम इमरजेंसी में यूज़ करेंगे. वो क्या था कि नॉर्मली क्या होता था कि गवर्नमेंट को जिस दिन लगता था कि अनियन जो है बहुत महंगे पड़ गए या फसल हुए, सडनली इट विल से कि होर्डिंग शुरू हो गई है और पीपल गो डाउन. मतलब होर्डिंग इज लाइक समथिंग विच हैज़ अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन कि आप होर्ड कर रहे हो. गो डाउन में और क्या होता है? होर्डिंग ही होती है ना एक तरह से. आप मतलब उसका आई डोंट इवन नो द सिनोनिम इज नॉट कमिंग टू माई माइंड. स्टोरेज. ठीक है. स्टोरेज को अगर आपको इलीगल करना, आप कह दोगे होर्डिंग कर रहे हो. बिजनेसमैन को जेल में डाल दिया. तो उससे क्या था कि पीपल वर प्रिपेयर टू मेक स्टेट ऑफ द आर्ट गोडाउन्स और फार्मर जो प्रोड्यूस करता था ही हैड टू सेल दैट इमीडिएटली. मतलब पेरिशेबल. वेस्ट में क्या होता है, आप 1-1 साल तक आप स्टोर कर सकते हो, तो आपका क्रॉप साइकिल आप मेंटेन कर सकते हो, उसमें आप इनोवेशंस ला सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि अगर आप अपना प्रोड्यूस स्टोर कर पाओ. ठीक है. लेकिन अगर आपको अपने प्रोडक्ट को इमीडिएटली सेल करना है तो इट्स लाइक पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल. आपने देखा है इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं फार्मर्स को. तो इसका ये था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये तो हटा देंगे इमरजेंसी में. एक वो था. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम एपीएमसी जो था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो कि सारा फार्मर्स जो है अपना प्रोड्यूस गवर्नमेंट सरकारी मंडीज में देता है, वहीं पे बेच सकता है वो. तो मोदी सरकार ने ये कहा कि हम इनको ऑल्टरनेटिव प्रदान करेंगे. यू हैव अ चॉइस ऑफ योर मंडी. आप प्राइवेट मंडी में जाके बेचो या एपीएमसी में बेचो. ठीक है. इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? मैंने आपको कहा चॉइस इज द बेड रॉक ऑफ प्रोग्रेस. ठीक है.
let's take an example. You have an innovative product as a businessman, up and coming, आपका स्टार्टअप है, आपका यूनिकॉर्न बन गया बिजनेस है. कल को सरकार, मोदी सरकार के कि आप अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं बेच सकते, आपको एक सरकारी सुपर बाजार वाले हमारा गवर्नमेंट पोर्टल उस पर बेचना होगा. वुड यू लाइक इट? नहीं ना, प्रोटेस्ट करोगे. ऑब्वियसली. ठीक है, लीगल केस कर दोगे.